जहानी मलिका बरतानिया क्वीन एलिजाबेथ दोम की वफात के बाद पूरे मुल्क में उनके लिए दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मशरकी लंदन की रेड ब्रिज काउंसिल के सामने भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लीडर ऑफ द काउंसिल जेस एथ्यूल के अलावा डिप्टी लीडर, काउंसलर्स और मुख्तलिफ मसाहिब के नुमाइंदा अफराद ने शिरकत की और मलिका की वफात पर अपनी अपनी कम्युनिटीज की तरफ से इजहार अफसोस किया। तफसीलात साहिरा खान की रिपोर्ट में। मलिका बरतानिया दोयम की वफात के बाद पूरे मुल्क में इनके लिए दुआ या तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मशरकी लंदन की रेडब्रिज काउंसिल के सामने भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लीडर ऑफ द काउंसिल जेस एथ्यूल के अलावा डिप्टी लीडर, काउंसलर और मुख्तलिफ मजाहिब के नुमाइंदे अफराद ने शिरकत की और मलिका की वफात पर अपनी अपनी कम्युनिटी की तरफ से इजहार अफसोस किया। We send our deepest sympathies to His Majesty King Charles III, members of the royal family, the nation and the Commonwealth. The Queen lived an extraordinary life of public service, duty and dedication. As Britain's longest reigning monarch, Her Majesty the Queen witnessed a remarkable transformation in the religious and ethnic composition of the United Kingdom. The Queen remained committed to building communities and encouraged religious harmony and friendship across the many different faith communities in the UK. Her faith guided her throughout her life. She was the people's queen. A queen for everyone, regardless of your beliefs or backgrounds. She was the stitches that bound the United Kingdom's multicultural patchwork together. दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए लीडर ऑफ द काउंसिल जेस एथ्यूल, डिप्टी लीडर, काउंसलर और दीगर अफराद का कहना था कि In a really beautiful country, and I think when the monarch passes, we have to pay the respect, and I think people are genuinely coming out with an outpouring of grief. Somebody who spanned her life over 70 years, to try and sort of look like the majestic oak tree that we all sheltered under, the anchor that held everything together. I think that's really important for us to celebrate her life and really take some lessons from that. And especially with King Charles III coming forward, it'll be really great for him to follow in her late Majesty's footsteps. Queen Elizabeth II, she was the longest reigning monarch. उन्होंने काफ़ी अरसा यहाँ हुकूमत की है, 70 साल से ज़ायद, और यही हम देखते हैं कि उन्होंने शी वाज अ फिगर ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी एंड यूनिटी। तो उन्होंने हर कम्युनिटी को इकट्ठा किया और यूनाइट किया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक्नॉलेज भी किया कि जो अचीवमेंट्स हैं, कंट्रीब्यूशंस हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, इंडिजिनस पॉपुलेशन एज वेल एज जो माइग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटी फेथ्स हैं, उनकी कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज भी किया। I'm just really proud that we've had another vigil. It's our last one of the week. It's been a good way for people to get together. There are people who are sad. I felt sad when the Queen did pass away. It felt like somebody you kind of knew, even though we've never met. She was there every Christmas because we had the Queen's speech, and it felt like someone who's been in your life for all of your life has left, and which they have, and it's just, I think, a way to remember somebody who's given us service in the country. We are British. This is where we live, and it's good to remember a monarch that served us so well. It was a pleasure living in the same era as the Queen, our longest serving monarch. 70 years of dedication, selflessly giving up her life. She was born into this. She didn't choose the life. She was born into it, but she did a magnificent job, a very, very difficult job. None of us could even imagine. Her time is up. She is now able to rest, and we are forever grateful for her. The least we can do is pay our respects at events like this, at vigils, writing our messages in the books of condolences, us adults, young, old. I mean, Queen had a reign of 70 years, and that's a very long period, and she'd done a great job, and she was the Queen of the Imperial, and she represented every country very well, and we was always very proud of her, proud of the work she done. Well, the Queen actually is our Commonwealth Queen, so a lot of the constituents who live here, they relate to her as someone who really cared about the Commonwealth, and the memories that we carry from our parents and great-grandparents, we see that
them all reflecting with the Queen. She has been portrayed as someone very kind, who cared, and she actually has been binding the communities together. क्वीन ने हमें यूके में और पूरी जो नेशनल कंट्री है उसको अपनी पूरी लाइफ टाइम दी है. 70 years is a long time कि एक आप स्टेबल रूलर बनना. सो शी इज़ गिवन डिवोटेड, अपनी लाइफ उसने डिवोट की थी नेशन के लिए एंड सब के लिए उसने हार्ड काम किया है एंड हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं. मलका बरतानिया के लिए मुल्क भर में दवाइया तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग शरीक होकर उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं. सहरा खान, दुनिया न्यूज़, लंदन.